सबका नमस्ते. Welcome to Life Simplified live session. So today we will be talking about how to transform addiction to self-control or self-mastery. So let's talk more about it in detail while everybody starts logging in. So पहले समझते हैं कि addiction होता क्या है और ये addiction क्यों होता है. What is the meaning of addiction and why does it happen? By the way, addiction is not just smoking, drinking or tobacco or pan masala or tea or coffee. Addiction सिर्फ ये नहीं होता. Addiction is something, it is basically an unregulated desire or an unregulated desire trying to want something. It could be related to eating something or it could be even related to thinking something in a very unregulated manner. So addiction यानी कि कोई ऐसी habit, कोई ऐसी चीज जिसका मेरा खुद पर control नहीं है. That is the true meaning of what we understand by the word addiction. So hence, addiction can be anything. It could be your mobile phone. It could be even a human being. Some people are addicted or obsessed about certain people. Some people are obsessed about certain thoughts. कि कुछ ऐसे विचार होते हैं जो हम लोग सोचे जाते हैं and we don't have control over it. We know that we should not be thinking, but we don't have control over it. So addiction basically means that there is a desire to think or say or do something. A habit, कोई ऐसी habit है thoughts level पर, emotional level पर या तो physical level पर. There is some habit which is unregulated, out of control. There is no control. और किसका control नहीं है? हमारा खुद के ऊपर control नहीं है. So let's say for example food. You're eating something. Now you know you should stop. So one part of your mind says, no, I should stop. But then other part of the says, no, I cannot. So you, the soul, basically you, your inner conscious, realizes and doesn't want to do it. But there are certain thoughts, certain energies जो आपको खुद के ऊपर control नहीं करने देती. So I repeat, addiction is not just about drinking addiction, food addiction, smoking addiction, pan masala addiction. It could be any habit. It could be any thought. It could be any obsessive habits, which may not be harmful habits. हम लोग smoking, drinking के बारे में ज़्यादा बात करते हैं because these habits are kind of little harmful to our body. But there are many such habits which may not be harmful, but just to understand this energy, ये जो energy होती है, it is basically a habit on which I, the soul, I don't have control. यानी कि हमारा खुद के ऊपर control नहीं रहता है in that particular habit. Okay, so that is why the opposite of addiction is self-control. Now, कल के सेशन में जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था about willpower, about not being lazy, about keep moving forward. तो विल पावर जो होता है ये एक्चुअली दो तरीके का होता है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड माइट बी समथिंग न्यू फॉर मेनी ऑफ अस. विल पावर दो तरीके का होता है. एक होता है द विल टू डू, दूसरा होता है द विल टू नॉट डू. बेसिकली द विल टू रिफ्रेन फ्रॉम अनहोलसम एक्शंस. सो ग्रैंड मास्टर चौकॉक वेरी ब्यूटिफुली सेज, refrain from unwholesome actions, refrain from unwholesome words, refrain from unwholesome thoughts. So basically, जैसे अगर हम लोग एक गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी अगर आपको अच्छे से चलानी है, ठीक से चलानी है, तो you as a driver, you need control of two main things. What are those two things? एक होता है एक्सेलरेटर और दूसरा होता है ब्रेक. ओके, तो विल पावर जो है
एक होता है विल पावर टू डू समथिंग, मतलब हमको कुछ करते जाना है, अनस्टॉपेबल रहना है और कुछ काम बस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है. सो उसके लिए भी विल पावर चाहिए. बट दैट विल पावर इज द ब्रेक, इज द इज द एक्सेलरेटर, जो सिर्फ आगे बढ़ता रहता है. you know? लेकिन जब एक्सेलरेटर आगे बढ़ता है, वी हैव टू एट टाइम्स स्टॉप. हमको गाड़ी स्टॉप भी करनी पड़ती है कभी कभी. अगर गाड़ी एफिशिएंटली चलानी है तो सिर्फ एक्सेलरेटर से या सिर्फ स्पीड से हम लोग गाड़ी ठीक से नहीं चला सकते. सो वी ऑल्सो नीड द एबिलिटी एंड द इनर पावर टू स्टॉप when needed. The inner power to say no to our own thoughts, to our own desires, to our own habits when we need to say no. So अगर हर बार हम लोग yes ही बोलते जाएंगे, एक होता है the will power to move forward, लेकिन एक होता है the will power to also pull back. तो will power का एक बहुत अच्छा सिंबल है. तो आप देखेंगे जो सिंबल है, जो वो जो तीर और कमान होता है, the bow and the arrow. So the bow and the arrow, you also pull the bow back and then the arrow moves forward. It's a combination of both. The energy to not do something and also the willpower to do something. Okay? So we need to have self-control on both. कहाँ पर हमको एक्सेलरेटर दबाना है वर्सेस कहाँ पर हमको ब्रेक करवाना है. तो हम लोग में से बहुत लोगों में कोई एक तरह का विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन दूसरे तरह का विल पावर थोड़ा वीक होता है. जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ काम अगर करना है तो वो कर लेते हैं, लेकिन कुछ काम करने से अगर उसको अपने आप को रोकना है तो वो रोक नहीं पाता. और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी गलत काम या कुछ भी काम नहीं करना है, दे नो टू पुट द ब्रेक वेरी वेल, बट अगर कुछ काम करना है तो वो वाली विल पावर उनकी थोड़ी सी वीक होती है. सो एक विल पावर आप देखेंगे एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज काइंड ऑफ मूविंग आउटवर्ड, whereas the other willpower is moving inwards, just like accelerator and brake. तो एडिक्शन जो है उसमें हमको विल पावर कुछ करने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन जो हम गलत कुछ कर रहे हैं, कोई गलत हैबिट जो हम एक बना रहे हैं, उस पे ब्रेक लगाने के लिए भी इनर विल पावर स्ट्रांग होना जरूरी है. से बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, दिन भर काम करते हैं, तो उनमें लेजीनेस नहीं होता, बहुत डायनामिज्म होता है. बट इट इज पॉसिबल दैट द फ्लिप साइड इज समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू से नो टू देमसेल्व्स. सो वी नीड टू हैव अ बैलेंस of this willpower. One is moving ahead, the other one is pulling ourselves back. तो एक में आपको yes बोलना पड़ता है और दूसरे में हमको no बोलना पड़ता है. So it's like a opposite will. But दोनों में, in both the qualities, in both the energies, it is connected to willpower. It's connected to divine will aspect of the soul. So the opposite of addiction is self-control or self-mastery. How much control do we have on ourselves? Now, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं? Of course, we will talk about some prayers and affirmations at the end of the talk. लेकिन अपने realization के लिए, we have to learn to say no to ourselves when it's needed. जब हमको अंदर से पता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है. आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, कैसे पता चलेगा? इसका जवाब हर इंसान का अलग है. टू ईच हिज ओन. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर पीपल इन अ पार्टी, वहाँ पे लोग अल्कोहल पी रहे हैं. नाउ वन पर्सन इज जस्ट हैविंग इट बिकॉज मे बी आउट ऑफ अ सोशल गैदरिंग, बट has control. He knows when to stop. The other person is also having it but doesn't have control when to stop. So दोनों एक ही काम कर रहे हैं. Both are doing the same thing. But the difference in the two is one knows when to stop. That is the meaning of self-control. Like even many people say that they go through gadget addictions or maybe social media addictions or maybe their phone addictions. तो phone इस्तेमाल करिए,
सोशल मीडिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, यू कैन बी ऑन नेटफ्लिक्स, you can keep doing these things. There is nothing wrong in that. What is wrong in this is you lose your own power over yourself of telling no. तो जब ये चीज हमारे ऊपर टेक ओवर कर लेता है या हमारा पावर खुद के ऊपर कम हो जाता है, that is where the problem may start, and that is where that little habit turns into addiction. यानी कि we not having our own control over a particular habit. Sometimes people have obsessive thoughts. In fact, on the mental level, as per my limited understanding, I really feel चिंता करना या the tendency to worry is one of the biggest mental addiction. एक mental addiction है, हर समय stressed रहना. जैसे बहुत लोग होते हैं उनको आदत होती है हर समय stressed रहने की. They are always stressed, they are always worried, they are always tensed. और किसी दिन अगर कोई उनको टॉपिक नहीं मिल रहा है वरी करने का या टेंशन में रहने का, देन दे फील टेंस कि अरे आज कुछ है नहीं करने के लिए, आज कुछ वरी करने के लिए है नहीं. सो दे एक्चुअली फील वरीड एज इफ हाउ कम एवरीथिंग इज सो पीसफुल, आई नीड टू हंट समथिंग. तो क्यों? बिकॉज ब्रेन को एक हैबिट हो गई है हर समय चिंता करने की या वरी करने की. ओके, सो रिमेंबर दिस एनालॉजी कि आप अगर एक अच्छे ड्राइवर बनना चाहते हैं अपने खुद के इमोशंस के, हमको दोनों चीज को बैलेंस करना है, एक्सेलरेटर एंड ब्रेक. ओनली एक्सेलरेटर ऑल्सो डजंट हेल्प, ओनली ब्रेक ऑल्सो डजंट हेल्प. आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं. दोनों विल पावर, दोनों विल से कनेक्टेड है, एंड बोथ आर इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट टू हैव सेल्फ कंट्रोल. राइट? So let us now go to the practical part कि अगर हमारे अंदर कोई सी habit है. So just for a moment you think, what are such habits, such thoughts, such habits and such actions which you do and you kind of tell yourself that I can't stop myself from doing this. You know, sometimes we say, oh, I can't stop myself from doing this. या आपने सोचा था कि कोई एक एक्टिविटी आप 15 मिनट के लिए करेंगे, लेकिन वो 15 मिनट की 2 घंटे कहाँ निकल गए आपको पता ही नहीं चला. That is loss of self-control. No? So it could be related to any habit, it could be related to any consumptions, it could be anything. जहाँ पर भी आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि I need to stop this, but I'm not being able to stop this. This is a mild form of addiction, and that is how addiction towards that particular thing starts or begins. So that needs to be regulated, that needs to be controlled. Okay, तो अब उसे हम control कैसे करेंगे? One way to control, of course, is by prayers and affirmations, which we will do now. So one way to control, let's practice. इसे practice करते हैं, कोशिश करते हैं implement करने की. So think about any one habit जिसका आपको ऐसा लगता है कि आपका उस हैबिट पर कंट्रोल नहीं है. जस्ट थिंक अबाउट इट. ओके, इट कुड बी एडिक्शन टू एनी फूड, मे बी एडिक्शन टू चॉकलेट्स, और मे बी एडिक्शन टू कॉफी और टी, और एनी हैबिट, anything. It could also be sleep, it could also be TV, it could be Netflix, anything. Okay, just mentally think about it. Now you may repeat after me as I say. Just hold that habit in your mind and you affirm, I am the soul, I am not this addiction. I am the soul, I let go of this addiction. I am the soul, I let go of this addiction. Thank you, God, for blessing me with divine will, with the ability to refrain from unwholesome actions, words, and thoughts. Thank you, God, for blessing me with divine will and the ability to refrain from unwholesome thoughts, unwholesome words, unwholesome actions. Let's repeat one more time. Thank you, God, for blessing me with the ability to refrain
from unwholesome actions, unwholesome words, unwholesome thoughts. Thank you for blessing me with divine will. Thank you for blessing me with self-control, with self-mastery. Thank you in full faith. So be it. Gently open your eyes. How do you feel? So next time, जब आप कोशिश कर रहे हैं कोई thoughts, words या actions को रोकने की, you can try this little prayer, this little affirmation, जिससे हमारे अंदर एक awareness आ सकती है to refrain, to pull ourselves back from something that is not right for us, something where we are slipping and we know that we need to stop. Okay? So with this, I would like to end for today. Have a nice day. Thank you very much for joining in. We will see you again.